Hi, so we have this chapter AC, chapter 7, class 12 physics. I hope you have read through the fundamentals. So, AC is about a current that changes with time. Why do we call it alternating current? Reason being that is how this moves. Okay, in time period T, which is omega is equal to 2 pi by T, the voltage and current goes through two peaks. E maximum and I maximum, and we take RMS values of both. So all of that you have studied, right? You have resistive load, you have capacitive load, you have inductive load, right? The impedance, which is square root of R square plus XL minus XC whole square. Okay, IRMS is equal to ERMS, okay, by R, all of that, I think, or Z in case of mix of all three, okay, which is inductor, capacitor, and resistor. So, all of that you have gone through. Now we have this series of questions 7.1 to 7.8, which we'll do in this. So, we'll take up first question. 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of current in the circuit? So resistance of the resistor is 400 ohm, supply voltage is 220 volt, frequency is 50 hertz. So RMS value of current is I is equal to V by R. Okay, because when they give you V, they actually give you VRMS. The peak value of voltage is of course root 2 VRMS. So we are presuming that we have VRMS here. So VRMS by R is 220 by 100 is 2.2 ohm. What is the net power consumed? The net power consumed is ERMS, IRMS cos phi. Okay, in case of a purely resistor circuit, cos phi is equal to 0. There is no phasor difference in case of a resistive load. So it will be ERMS and VRMS. So that is P is equal to VI. They have written simply. They could have written using some of those smarter terms which I am writing. So and then that looks better, okay, but anyway, this is what we arrive at, 484 watts. Now the next one, peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS voltage? RMS voltage is peak voltage over root 2. So VRMS is, they should have written, so peak voltage supply is 300, so VRMS is equal to V peak by root 2, that is 300 by root 2, that is 212.1 volt. Next, the RMS value of current in AC circuit is 10 ampere. What is the peak current? Peak current is always root 2 times. So I peak will be root 2 into I RMS. That is what they have done here. So root 2 into 10 is 14.1 ampere. Question number 3. A 44 mH inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. So you have F here, you have V here, you have L here. Determine the RMS value of the current. So RMS value of the current I will be V over XL. XL is inductive impedance. XL is equal to omega L. Okay. Omega is 2 pi F. So F is here. This is the frequency at which it is working. So that is 2 pi into 50 into F. Okay, into L. It is 44 millihenry. It is 44 into 10 minus 3. सब लगा दिया V का वैल्यू आपके पास है 220, तो आपको आंसर आ गया 15.92 एम्पियर. Hence the RMS value of the current in the circuit is this. Question number 4. A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो आई थिंक आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो आपके पास यहाँ F दिया हुआ है, यहाँ V दिया हुआ है, यहाँ आपको C दिया हुआ है. Okay, determine the RMS value of the current. RMS value of the current will be V over XC, and XC is equal to 1 by WC.
right? So Xc is 1 by Wc, which is 1 by 2 pi Vc is equal to this many ohm, and I is equal to V over Xc, that is 220 by, you put this value. Wait a minute, Wc, so this should actually come up, so it will become, this is 1 over this, okay, so this is denominator, this will come up, so it will become 220 into 2 pi into 3600 into 10 to the power minus 6, okay, right? तो आप देख लीजिए 220 into 2 pi is almost 6, वो 1200 हो गया into 3600, that is like 10 to the power 3, 10 to the power 3 gone, right? So 1.2 into 3.6, right? That will be approximately 2.49 ampere. Yeah, so one small mistake. Next is exercise 7.3, 7.4. What is the net power absorbed by each circuit or a complete cycle? Okay, net power absorbed circuit, explain your answer. So P RMS, P average पूछ रहे हैं आपसे. So P average is V RMS I RMS cos phi. Okay, phi is the phase difference. So phase difference कैसे निकालेंगे? Cos phi, sorry, tan phi is equal to XL over XL minus XC over R. Okay, कैसे बनता है फेजर डायग्राम? VR is in the direction of IR. Okay, एंड इंडक्टर के केस में इंडक्टर हमेशा कैपेसिटर आपका लैग करेगा 90 डिग्री और इंडक्टर आपको लीड करेगा 90 डिग्री. ओके, तो ये हो गया एक्सएल, ये हो गया एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी. मान लीजिए एक्सएल बड़ा है, यहाँ पर क्या आ रहा है एक्सएल, एक मिनट वैल्यू देखने दीजिए. ओके, सो करेक्ट, P is equal to 0, net power is 0. The comparative circuit RMS value of current RMS value voltage. अच्छा, अलग अलग पूछा है, दोनों को मिलाया नहीं. तो अलग अलग केस में देखिए, फाइव इक्वल टू 90 डिग्री तो आपका कॉस 90 जीरो होता है, तो यही कॉस फाइव जीरो हो गया. ओके, और कैपेसिटिव में भी यही होगा. ओके, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट तो मिल गई, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी मिल गई. कॉस फाइव विल बी 90, सो इट विल बी जीरो. आई थॉट ये कैपेसिटर और इंडक्टर सब मिला दिए और आरएलसी सर्किट बना दिया, बट एनीवे इवन दिस नॉलेज विल हेल्प यू. ओके, so here they are saying individually, so individually in 7.3 and 7.4 पावर एब्जॉर्ब जो होगी या पावर स्पेंड विल बी जीरो, बिकॉज वी आई कॉस फाइव में फाइव जो है 90 डिग्री है. ओके, आई डेंट रीड दैट स्टेटमेंट. Now next is charge 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillation circuit? Very easy. तो आप एक्सएल देखिए, एक्सएल इज इक्वल टू, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज 1 by root LC. ओके, so because WC is equal to is equal to 1 by WC, that is XC, and XL is equal to omega L. Okay, so the frequency to happen XL minus XC should be 0, so WL should be 1 by WC, so W square is equal to 1 by LC, so W is equal to 1 by root LC. That is the natural frequency. तो ये आपने वैल्यूज लगा दिए और आपको वैल्यूज मिल गए, है ना. 30 माइक्रोफैरड 10⁻⁶ मिली हेनरी को -3 कर दिया, ये आ गया 1.11 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. 7.7 सीरीज एलसीआर सर्किट में आर दिया है, एल दिया है, सी दिया हुआ है, और आपको एफ दिया हुआ है और वी दिया हुआ है. अच्छा, एफ नहीं दिया, एफ पूछा है. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. ओके, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल. ओके, तो हम क्या करेंगे, एलसी निकालेंगे, यहाँ पर ओमेगा निकालेंगे. ओके, सो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, सो जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 20 ओम, एंड एलसी निकाल लिया आपने. आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, 200 बाई 2010 एम्पियर निकाल लिया. एस, और उसमें कॉस फाइव तो जीरो ही हो गया, बिकॉज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो कॉस फाइव जीरो हो गया. आपका क्वेश्चन क्या था?
When the frequency supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit? So typically इस तरह का ग्राफ बनता है डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू का, और ये आपका करंट है, ये डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू को अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्चुअली सेम टाइप का एक्सपोनेंशियल डाउन होता है। ओके, और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है। ओके, ये आपका मान लीजिए 100 ओम पर है, तो ये 200 ओम पर है और ये 300 ओम पर है। सो करंट इज मैक्सिमम, राइट? सो करंट इज आई इज इक्वल वी बाई जेड बिकॉज एक्सएल इज इक्वल एक्सी, तो ये कंपोनेंट हो गया 0, राइट? जेड इज इक्वल आर इज इक्वल टू 20 ओम, तो 200 बाई, ये आपको 10 ओम मिल गया, तो पावर एवरेज विल बी वी आई। और कॉस फाई 0 हो गया बिकॉज कॉस फाई में एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर होता है कॉस फाई। जब ऊपर एक्सएल माइनस एक्सी 0 है बिकॉज एक्सएल इज इक्वल एक्सी, तो कॉस फाई क्या हो गया 0। तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, राइट? कॉस फाई हो गया कॉस 0 1, तो क्या हो गया पी इज इक्वल टू वी इंटू आई है। चलिए नेक्स्ट है शो द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। L is 5 Henry, C is 80 microfarad, R is equal to this. Determine the source frequency which drives the circuit in resonance. तो हम क्या करेंगे, इसका हम W निकालेंगे। W is equal to 1 by root LC. Okay, 1 by root 5 into 80, 400 is 1 by 20. 10 power minus 6 भी आएगा तो ऊपर 10 power 3 आ जाएगा। So I think ये हो जाएगा आपका ओमेगा रेजोनेंस इज इक्वल टू 1 by root LC is equal to 10 power 3 by 20 is 50 radian per second. And the circuit will be in common resistance for source frequency 50 radian per second. और impedance of the circuit is R square plus XL minus XC, तो XL is equal to XC, तो वो तो 0 हो गया, Z is equal to simple R हो गया, which is 40 ohm. The amplitude of the current will be peak value, that is peak value of the voltage will be I0 is root 2V by Z, okay, because ये आपको RMS वैल्यू दी हुई है ऊपर। B क्या है, obtain the circuit, determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit. Show the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आ गया, ये आपकी वी एल आर एम एस निकाल लिया, आई क्रॉस डब्ल्यू एल। ओके, सो आई आर एम एस इज आई 0 बाई डब्ल्यू टू बाई रूट टू, राइट? उसको हम पहले ही आई आर एम एस वी आर एम एस को जी से डिवाइड करके निकाल सकते थे। यहाँ पर Z is equal to R only because XL is equal to XC, तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ से IRMS सीधे निकाल सकते थे। I0 मांगा होगा आई थिंक, ऊपर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ओके ठीक है, एम्पलीट्यूड मांगा है, तो सर्किट करेक्ट। अब आ जाइए नीचे, तो आपको मिला यहाँ पर वी आर एम एस करो इतना, तो वी आर आर एम एस हो गया 230 वोल्ट, राइट? और वी सी आर एम एस आई इंटू एक्सी, एक्सी क्या हो गया 1 बाई ओमेगा रेजोनेंस इंटू सी, ओके, दैट इज इक्वल टू 1437.5 वोल्ट। और एक्सएल क्या हो गया इज इक्वल टू एक्सी विच इज ऑल्सो सेम 1437.5, तो वी एल सी इज आई एक्सएल माइनस एक्सी, दैट इज 0 because resonance में XL is equal to XC. Potential drop across the LC combination 0. Okay, VL भी निकाला है, VL भी निकाला है, that is 23/4 एम्पियर IRMS into ये आपका ओमेगा L होता है, ओमेगा L, ओमेगा 50 और L 5 हेनरी है, राइट? तो वो 4437, आप देखिए दोनों बराबर हैं। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि we drop across capacitor and voltage drop across resistor are same. तो क्या होता है जब ऑसिलेशन के केस में मैग्नेटिक एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, तो वो फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है एंड एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के बीच एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। तो सारा जो पोटेंशियल है वो अक्रॉस रेजिस्टर ड्रॉप हो रहा है 230 वोल्ट, जो आपका पोटेंशियल दिया हुआ है। इस टॉपिक पर मैं जब चैप्टर नोट्स बनाऊंगा तो काफी ज्ञान है मेरे पास, आई विल शेयर विद यू।
बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। और आप इसको पढ़िए ध्यान से। और बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसको। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग अराउंड। Please subscribe and we'll add many more chapters as we go. Thank you.